to finish, right? So what is the formula of ironing verb? Team, the formula of ironing verb we have done is, IS, IT, IT, ISS, ISONS, and EZ, this is the ENT. formula of ironing verb. What is the formula of ironing verb? So what we do, it is just we have to remove IR. So je finis. I have to remove IR, right? And I have to insert IN. Tu finis. Is it clear to you, team? Yes, sir. Il fini. It is just I have to add FIN. Nous finissons. Vous finissez. Finissez. FINISSEZ and il finis. Is it clear to you, team? Yes, sir. Now, Yes. for example, if I will move this verb to the passé composé, if I will move this verb with past indefinite, passé composé, c'est clair, team? So, finir, we have past. As I already explained to you, the moment we are doing the past activities, clear, team? So, that would be either I have to take the help of our or either H verb. अब मैंने आपको बता दिया that these verb belongs to our family verb and finir pepe is fini. Repeat after me. The pepe, the past of finir is fini. 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 Clear? So tell me, Yes. I finished. Our family present. J'ai fini. Say Claire. Team, is it clear to you? Yes, sir. Yes. Fini. Taran, Amarjeet, is it clear to you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Fini. Claire. Nous avons fini. Say Claire. Yes, sir. We are doing consistently, continuously the verb conjugation so that you will come to know like how to make all these sentence formations. Vous avez fini, c'est clair. And ils, elles ont fini. Yeah. For example, if I will say l'em parfait of finir verb. For example, l'em parfait, c'est-à-dire quoi? This is your in English past continuous tense. L'em parfait. Now, what is the formula of lamp part 15? First, we have to conjugate new present tense. So, what is that? Finissons. Is it clear to you? Hello. Yes. Paka, we have to remove ONS. What is the formula? AIS. Je finissais. अब टीम मैं आपको कुछ वर्ब दूंगा which you have to conjugate. आप कर सकते हो वर्ब जैसे finissons. I have to remove what? Team finir, ISSONS. I have to remove ONS from the end. You say, all of you, is it clear to you? Tell me, please, yes and no. Yes, sir. ONS, then AIT. Clear? No. FINISSONS. Ending is ONS remove. And ending is what? IONS. Finition. All of you, is it clear to you? Clear? Now, see, I'm converting first with finissons. Is it clear to you? And remove ONS. And that is IEZ, finissier. Clear? And il. Bonjour, sir. Bonjour, Daksh. How are you? Il, Très bien, sir. Sir, ये क्या कर रहे हैं? सेम जो हम कल कर रहे थे लैम्प पारफे सेशन देख रहे हो सारे जो वीडियो पे अपलोड हो रहे हैं ना प्रैक्टिस कर जी सर. So same we are doing the which we have done what we have done yesterday. We were doing present, passé, lem parfait. Clear? So il, el, I have to remove ONS, AIENT, finissant. So repeat after me. Je finissais, tu finissais, il, elle finissait, nous finissons, vous finissiez, il finissait. Team, is it clear to you? Yes. Now, for example, if I will move to a future, what is the formula of future, team? Bolo. Re, ra, ra. Repeat after me. Re, ra, ra. Ron, re, ron. Team, you understand now
the concept of our teaching is dramatically we are doing everyday grammar first so that you will used to with the grammar, because without grammar there is no base. Is it clear to your team? Yes, sir. तरन समझ आ रहा है जो हम कर रहे हैं? हाँ जी सर. तो here what I will enter over here, let me enter Sandeep also one second. So here finire, F-I-N-I-R-A-I, we have an ending. Tu finira, is it clear to you? Il finira, clear? No finiron, clear? And Yes. who finire, clear? And il finiron, is it clear to you, all of you? Yes, sir. Now what is my future antérieur? I will have finished. किया था हमने? I will have finished. Karan, Amarjeet, Yes, sir. Yes, sir. finished, passé composé, तो fini, clear? Okay. Now, Yes. whenever you have passé composé, finished, you have to use either our and être family. Now, finir is my our family. Clear? So, what would be the will of our family? Tell me. Will of our. Ahora, Yore, llore. yore fini. समझ आ रहा है आपको टीम? Yes, तरन, sir. Sure. Yes, sir. तरन, अमरजीत, पक्का समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी. Chiu ora fini. देखो इसका ना हमें प्रैक्टिस करना है. जो सेशंस हैं एटलीस्ट 5-6 सेशन ऑलरेडी अपलोडेड हैं, उसको आपको, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Yore fini, chiu ora fini, il el ora, because you know what? It is just because I have to understand about, see, what is this now? Now you came to know, I have to understand être avoir futur, être avoir l'imparfait, être avoir present tense. Clear? If I want to speak very good French, I have to be understand about être avoir present, être avoir l'imparfait, which we use in pluka parfait, clear team, and être avoir futur. Nous aurons, is it clear to you? Nous aurons, we would have finished. Nous aurons fini. You would have finished. Vous aurez fini. Is it clear to you? Team, is it clear to you? Yes, sir. Elles auront fini. Is it clear to you, all of you? Clear? Clear, team? Now, for Yes. example, if I will convert this verb in I have finished, finished, past, fini. So, team, see what I'm doing over here. I'm picking one verb so that you will come to know entire thing, because finir pepe is fini. So I have finished. This tense we called as l'imparfait, sorry, pluka parfait in French. I have finished. This tense we called as pluka parfait in French. Is it clear to you? Yes, sir. So, what is formula pluka parfait? Either our and être l'imparfait. Tell me, team. Yes. Yes, sir. What is Yes, sir. because finir is my our family verb. So what is the l'imparfait of our? Tell me. Jave, team, आप मुझे रिस्पॉन्स करोगे ना, अदरवाइज हाउ आई विल कम टू नो कि आपको समझ आ रहा है. Jave fini समझ आ रहा है आपको? Pluka parfait, because l'imparfait of our is our. Clear? You ave fini. मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ टीम, बट आपको मुझे रिस्पॉन्स करना. आई विल एक्सप्लेन यू अगेन. Our and être I'm going to explain again. What is the present tense of être verb? Je suis, बहुत ध्यान से अब समझना.
to a, because my French is based upon our and être conjugations. Either I take our être present tense, either I take our être l'imparfait, either I take our être futur. Is it clear to you? Yes. Yes, sir. कारण हम यही तो कर रहे हैं ना, ये our यही is कर रहे हैं. बाकी फिर पास चल रहा है, सिंपल. समझ आ रहा है टीम? हाँ जी सर. हम्म. Être present is je suis, tu es, il, elle est, nous sommes, vous êtes, and ils, elles sont. Clear? Our present is what? Je. Our present tense. Tu as, il, elle a. Clear? Nous avons, vous avez, ils, elles ont. Now, if I want to convert, past tense, team, if I want to convert past tense, in past tense, I have to use present tense of our verb or either être present tense plus past tense of the verb. Is it clear to you, team? Tell me yes and no. Yes, sir. यहाँ तक क्लियर हो रहा है आपको? Past tense. हाँ जी सर. Now, for example, if I want to convert present perfect tense, that we call as plus parfait in French. For making plus parfait, I have to use l'imparfait. I have to use l'imparfait of avoir, either être present perfect tense में plus present perfect tense plus parfait, l'imparfait of either avoir and être plus past tense of the main verb. Now, what is l'imparfait of être? Please practice. Formula is avons, remove, j'avais. J'avais is l'imparfait of avoir. Is it clear to you, team? Tell me yes and no. Tu avais. Team, is it clear to you? Tell me, please. Yes, sir. Taran, Daksh, And- we already have done this thing. We are doing from the last so many days. Yes, sir. Tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, and il, elle avait. Please watch entire session. Today I will share सारे जितने भी हमारे ग्रामर के सेशंस हैं टीम, I will share 5 and 6 sessions with you so that कि आप बस WhatsApp पे रहें और आप प्रैक्टिस करते रहें. Clear? Être l'imparfait team. Practice please. Être l'imparfait. J'étais. Tu étais. Être l'imparfait team. Il, elle était. Nous étions. Vous étiez. Is it clear to you, team? And il, elle, étaient. Is it clear to you? Être l'imparfait. J'étais, tu étais, il, elle était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Être l'imparfait. Clear what, team? Yes, sir. टीम, अगर अब मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे प्लू का पार्फे बनाना है, फॉर एग्जांपल, for making प्लू का पार्फे you have to use l'imparfait of either avoir and être. Now for example, now ये समझ आया टीम आपको? Yes, sir. All of you, is it clear to you? Yes, sir. Now team, I'm going to explain to you how I will come to know these are my être family and these are my our family. Clear, team? I will show you one image wherein you have to understand first our family, sorry, être family verbs. Is it clear to you? Sorry. Sorry. Now you have to understand first
What are my être family verbs? Clear, team? Team, it is very important to understand first, because our major verbs we have which conjugate with our family verbs. So for this reason, I will make you to introduce with être family verbs. And please, it is very important. Let me share the screen with you. Tell me, is that screen is visible to you? Team, we take the birth. From born till death, we have our être family verb. Now, for example, we have first verb. Team, is it visible to you that natural? दिख रहा है आपको natural, team? Yes, sir. Yes, sir. Natural is my verb to born. Natural is my verb to born. Repeat after me. Natural. Repeat after me. Natural. Repeat after me. Natural. Team, session is very important. Murir is my verb to die. Murir. Movie. So from your born to death, this is my être family verb. Is it clear to your team? Natural Yes, sir. is my verb to born. Morir is my verb to die. Is it clear to your team? Now, for example, team, it is just I'm giving the formula how to recollect, how to learn the être family verb. Team, if you have born till death, être family verb, and the moment we have a leg movement verbs. If we have leg movement verbs, for example, tombe, देखो यहाँ पे is falling down. The boy is falling down over here. Falling down. So tombe is my verb to fall. So whenever your leg slip somewhere, you fall. So team, if we have, not in every case, but it is just I'm giving you some sense how to remember those être family verb. If we have a leg movement, tombe is my verb to fall, être family verb. Vanir, repeat after me, team. Vanir, repeat after me, please. Vanir, vanir is my Vanir. verb to come. Come, we are using legs. So être family verb. Is it clear to you? Repeat after me. Tombe Tombe. is to fell down. Is it clear Is to to you, team? Fell down. Fell down. Vanir is to come. Is it clear to you, team? Reste Yes, is sir. to rest. Reste is to rest is my to être rest. family verb. Team, descendre. Look over here. Descendre. Descendre is to get down. The moment you step down the stairs, you use your legs. So descendre is to get down, être family verb. Monte is to go up. Monte is to climb up, go up using your legs. Être family verb. Team, you have to learn these verbs. Repeat after me. Nature is to born. Repeat after me. Nature is Nature. to born. Morir is to die. Morir Morir is to die. Tombe is to fall down. Tombe Tombe is to fall down. Vanir is to come. Vanir is to Vanir come. is to come. Reste is to rest. Rest is Rest is to rest. Descendre is to get down. Descendre is to get to get down. down. Rentre. Rentre is to re-enter. Whenever you re-enter somewhere, you're using your legs. Rentre. Repeat after me. Rentre. Entre is to enter and rentre is to re-enter. We have verb entre first. Team E-N-T-R-E-R. Entre. Enter. Re-enter. Rentre. Être family verb. Say clair, team. Monte is to climb up. Monte. Monte. Climb up. Monte. Sortir. climb up. Repeat after me, team. Sortir. Sortir is to Sortir. go out. Sortir is Whenever to you go out somewhere, you're using your legs. Say clear, team. Is it clear to you? Yes, sir. Team, these are the very important verbs. Please watch this session again and again. It will help you. Is it clear to you? Yes, sir. Partir. Repeat after me, team. Partir. Partir Partir. is my verb to leave. Partir. Partir. Partir, living somewhere, using your legs.
Arrive. Arrive is to arrive. Whenever you're arriving, using your legs. Passe is to pass. You know, you pass by using your legs. Team समझ आ रहा है आपको सभी को? Tell me yes and no. Yes, Don't sir. worry, session is under recording. You have to watch those sessions. This is the reason we record the session, send it back to you. Ale. Ale is my verb to go. Ale is my verb to Is my go, verb to go. which is using your legs. Raturne. Raturne is my verb to return. Ravnir is my verb to come back. Team, pen down, please. I'm repeating one more time. Netra is to born. Repeat after me, please. Netra is to Not born. is to born. That is to born. Murir is to die. Morir is to Morir die. is to die. Tombe is to fell down. Tombe Tombe is to is fell to fell down. down. Vanir is to come. Vanir is to Veneer come. is to come. Pachtir is to leave. Parti is to leave. Clear? Arrive is to arrive. Arrive is to arrive. arrive. Passe is to pass. Passe is to is to pass. pass. Ale is to go. Ale is to go. Raturne is to return. है ना, हम turn लेते हैं, to take a turn. So you take a turn, you're using your legs. Raturne. Repeat after me. Raturne is to Raturne. return. Ravnir. Team. Vanir is to come. What is Vanir? Vanir is to come. Veneer is to Whenever I come. say Ravnir, see over here. Is it visible to you, Ravnir? Whenever we have Ravnir, is it visible to you, team? Ravnir? Yes, sir. Yes, sir. Come back. Vanir is to come. Ravnir is to come back. Sohtir. Sohtir is to go out. Repeat after me. Sohtir. Sorti. Monte is to climb up. Monte. Repeat after me. Monte is to climb up. Clear? Monte is to Rentre is to re-enter. Rentre. Descendre is to get down. Team, is it clear to you? Tell me yes and no. down. Yes, sir. Yes, sir. Team, I understand this is a new verb for you. Clear? Okay. But over here, you have to watch this session. Now, for example, we have verb ale team. मेरे को ध्यान समझना टीम, ये बहुत important session है. और मैं खाली what we are doing over here, we're only picking one verbs so that you will come to know at least. Is it clear to you? And today I will only make you to introduce with ale h verb. Now, for example, team, you came to know h family verb, and rest we have entire verb, we have our family verbs. Our family. Obviously, we have some subverbs also, which I will explain to you, which is h family verb, but after that. So we have verb ale. Ale we are using is to go, because this is my leg movement verb. So what is the present tense of ale verb? Team, ये कुछ ऐसी verbs हैं wherein you have to learn by heart their present tense. There is no formula. Repeat after me. Je vais is to I go. We have done already irregular verbs. Amarjeet. Yes, yes, sir. Je vais is to I go. Tu vas Yes. is to you go. You have to You go. understand verb by heart. Je vais is to, repeat after me. Je vais is to I go. Je vais is to I go. Tu vas is to you go. Tu vas is to you go. Elle va is to he she goes. Elle va is to he she goes. Nous allons is to we go. Nous allons is to we go. Nous allons. Claire, अमरजीत समझ आ रहा है आपको? Nous allons. Yes, sir. Yes, sir. Vous allez is to you go. Vous allez is to you go. And elles vont is to they go. You have to Ils, understand elles present vont tense. is You have to to do go. practice for this. Team, these are very important verbs. क्योंकि what is this basically? If I'm not aware of these type of verbs, I cannot speak the language. I cannot participate in theaters. Is it clear to you? Now, for example, what if my verb is ending from er, team? That's a rule. My past would be alle, ague.
ए वाला साइन, ई के ऊपर हम टीम ए वाला साइन लगाओगे आप, ए वाला साइन, यू नो ई के ऊपर ए वाला साइन, bottom to top going towards right hand side. Is it clear to you team? Ale, E sound is A. Is it clear to you team? Yes, sir. Now team, Ale belongs to my H family verb. So in case of past, I have to use H present tense. So what is I went? Je suis, zale. Is it clear to you? H family verb, H present tense, tu es, zale. Team ये समझ आ रहा है आपको? Tell me yes and no. Yes, yes. Yes, sir. Il, la, tale. One thing you have to understand. If in your only in case of H family verb, if you have a female like la, tale, she went. If you have a female over here, la, tale, she went. For female in H family verb only, not in our family verb, we have to apply e extra for a girl. Is it clear to you team? Yes. Yes, sir. टीम ये बहुत ट्रिकी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको सिर्फ एक दो वर्ब्स ही करवा रहा हूँ एंड प्रैक्टिस करना है आपको। क्लियर टीम? अब जैसे नु सोम, एथ फैमिली इज व्हाट? नु सोम जाले। टीम इफ वी हैव अ प्लूरल लाइक वी वेंट, बहुत सारे लोग वी वेंट, आई हैव टू ऐड एस, सो वी हैव टू ऐड ई फॉर गर्ल एंड आई हैव टू ऐड एस फॉर प्लूरल। इज इट क्लियर टू यू टीम? टेल मी यस एंड नो। Team, is it clear to you? Yes, sir. All of you, please tell me, is it clear to you? Amarjit, Taran, Daksh, Mr. Yes, sir. and Yes, sir. Sandeep Ji and Meher, is it clear to you? Team, tell Yes, me, sir. clear to you? So, Wuzet Zale, if I will say il plural, L female plural, L som, because it's a family verb, A-L-L-E-A-Q, A wala symbol. For il son tale, if I'm saying boy, il son tale, so I have to add s because there are a lot of boys. And for girls, el son tale, both sari, we have lot of girls, so we have to add es at the end of ale. Is it clear to you team? Tell me yes and no. All of you, is it clear to you concept? Yes, sir. Yes, sir. टीम इसका प्रैक्टिस करोगे आपको आएगा समझ, बट आपको प्रैक्टिस करना है। और मैं ज्यादा फिर ये हम पास से कंपोजे कर रहे हैं ना? यस, पास से कंपोज है, ये पास से में ही तो हम एच का प्रेजेंट यूज करते हैं ना, ये आवर का प्रेजेंट यूज Yes. करते हैं। Yes, yes, इसका sir. तो मैं बनाऊं इसका लेम पारफे आले वर्ब का। ठीक है। सो व्हाट इज आले वर्ब लेम पारफे? सबसे पहले आप इसको नू में कन्वर्ट करते हो, Yes. आलो ओएनएस हटाते हो और एआईएस लगाते हो, तो सिंपल है जाले, आई वाज गोइंग एंड आई यूज्ड टू गो। इज इट क्लियर टू यू टीम? Yes, sir. All of you, is it clear to you? Tell me yes and no. Yes, sir. Yes, sir. सालियों, टीम समझ आ रहा है? पहले से कंपैरिजन समझ आ रहा है? पहले की अगर हम क्लास देखें जब हम ग्रामर स्टार्ट की थी, अभी में कितना समझ आ रहा है आपको? टेल मी प्लीज। तो बहुत फर्क है। क्लियर? हम डेली बेसिस पे अभी हम ना इस वीक यही चीज करेंगे सो दैट हमारा ग्रामर स्ट्रॉन्ग हो, देन विल नेक्स्ट वीक में हमारे थिएटर्स ही हैं बैक टू बैक। क्लियर? टेफ के थिएटर्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स विल डू। क्लियर? सो हम डेली बेस पे एक दो वर्ब्स पकड़ रहे हैं which is very important verbs, right? Now for example, if I will say I have gone, now you came to know I have gone. Pluka parfait team, क्योंकि I have gone present perfect tense we call as pluka parfait. In Yes. I have gone when, I have gone ale egu, a past है, so it means I have to use être, क्योंकि ale belongs to my être family verb, so être lem parfait. Is it clear to you team? So what is être lem parfait? अभी हमने किया था j'étais. Is it clear to you? J'étais allé is I have gone. Is it clear to you team? Hello, is it clear to you? Yes, sir. All of you, is it clear to you? Tell me yes and no. You have gone. It is just here to understand I have gone. This is pluka parfait, lem parfait of être, because ale is my être family verb and past tense. Tu étais allé, il elle était. कर लोगे टीम ये अपने आप? Tell me. हाँ जी, sir. Yes, sir. Clear हो रहा है आपको टीम? Tell me yes and no.
हाँ जी सर। करण मैं कर दूं या कर लोगे बच्चे? सर ये कर लेंगे। कर लोगे? इट इज जस्ट हाँ जी। आपको लैम्पार्ड पे लगाना है, नू जेतियो जाले से क्लियर टीम। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। नाउ फॉर एग्जांपल, अच्छा इसमें भी ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब देखो एल लेते ताले करते तो यहाँ पे ई लगा दोगे गर्ल के लिए। क्लियर? क्लियर हो रहा है? ये खाली आपका एच फैमिली में है, आवर में नहीं है ये केस। क्लियर? अच्छा अगर मैं बोलूं आई विल हैव गॉन, अब गॉन क्या है आपका? आले ई एक्यू ए वाला सिंबल कर लोगे ना, ई के ऊपर ए वाला सिंबल लगाओगे आप। क्लियर? हाँ जी। अब विल, एत्र का विल क्या है? सरे, करा था कल। सर सरे हाँ जी। एस ई से स्टार्ट होगा, सो य सरे आले। इज इट क्लियर टू योर टीम? क्लियर हो रहा है टीम? प्लीज टेल मी यस एंड नो। Yes. Yes, sir. Have gone tyu sare, tyu sara, sorry, tyu sara zale il el sara, क्योंकि यहाँ पे रे रा रा जाले। अब एल के केस में क्या होगा? यहाँ पे शी विल हैव कम, एक ई एक्स्ट्रा लग जाएगा टीम, गर्ल है। नु ठीक है। सरों अब जाले, अब यहाँ पे बहुत सारे हैं हम, तो यहाँ पे एस लग जाएगा लास्ट में। इज इट क्लियर टू योर टीम? वो सरे जाले एंड इल एल सरों। इज इट क्लियर टू योर टीम? ताले यस सर। प्लूरल है तो एस, फीमेल प्लूरल है तो ई एस। क्लियर? हाँ जी। टीम सबको समझ आ रहा है ये? टेल मी ऑल ऑफ यू, इज इट क्लियर टू यू? हाँ Yes, जी sir. सर। देखो मैं एक चीज ध्यान समझना, आपसे मैं 5 रिकॉर्डिंग शेयर करने वाला हूं आज ही की डेट में, नेक्स्ट 1 2 आवर्स तक आपको आ जाएगी। ठीक है? 5 की 5 रिकॉर्डिंग्स ग्रामर के सेशंस हैं, लिटरली ग्रामर के सेशंस हैं सारे जो अभी आपने किए हैं। उन सभी सेशन को गो थ्रू करना है आपको एंड इट विल हेल्प यू। करोगे आप ये काम? टेल मी। Yes, sir. हाँ जी सर। अब जैसे अगर मैं बोलूं आई विल गो, सिंपल बनाता हूं, अगर मैं आई विल गो, टीम देखो गो जो है ना हमारा, हमने इसका प्रेजेंट लर्न किया है, जवे च्यू, ऐसा फॉर्मूला नहीं है। ऐसी टीम फॉर्मूला तो फ्यूचर का सेम ही है ना, रे रा रा। क्लियर? क्या फॉर्मूला है? रो रे रो फ्यूचर है टीम। टेल मी। Yes, yes. हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि देखो जिसका ना, जिस फैमिली का, जिस वर्ब का प्रेजेंट टेंस डिफरेंट है, उसका कहीं ना कहीं विल भी डिफरेंट ही लगता है। तो हमेशा ध्यान रखना है, जो आले का जो गो का जो विल है वो आई से स्टार्ट होता है टीम। किससे स्टार्ट होता है आपका? आई से। बोलो गो का जो विल है, सिंपल आई विल गो, सिंपल आई विल गो बोलोगे तो बच्चों वो आई से स्टार्ट होगा, तो क्या हो जाएगा? जीरे इज टू आई विल गो। इज इट क्लियर टू यू? टेल मी यस एंड नो। च्यू इरा, तरन समझ आ रहा है ये? हाँ जी सर। इट इज जस्ट यू टू अंडरस्टैंड कि जो मेरा आले का जो विल है वो आई से शुरू होगा, बाकी तो फॉर्मूला ही है, रे रा रा रो रे रो। आले का जो विल है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम आई, आले विल दैट स्टार्ट्स फ्रॉम I. Is it clear to you? No zero. So one thing you have to understand, my ale will that starts from I. Now repeat after me. Our will starts from AU. Repeat after me, please. Our Ether will will starts from AU. starts from SE. Ale will starts from I. Savar क्या था? We have done Savar of team. Tell me yes and no. Savar. Yes, Yes sir. Savar will start from SAU. It is just AU के साथ SAU लगाओगे. Is it clear to you team? Tell me yes and no. Yes sir. हम डेली बेसिस पे 1 या 2 वर्ब्स ही पिक करेंगे, ज्यादा हैवी भी नहीं करेंगे, एंड ग्रेजुअली इन द नेक्स्ट 7 डेज में आपके पास कोई 8 9 10 11 वर्ब्स होंगी और वो सारी वर्ब्स पे बेस होंगी। Is it clear to you team? Yes, sir. Yes sir. क्लियर? तो टीम मैं सेशन ज्यादा हैवी नहीं कर रहा हूँ आप लोग के लिए,
अब आपके साथ मैं ये वाला सेशन भी शेयर करूंगा, अदर 5-6 सेशंस भी शेयर करूंगा मैं, सारे ग्रामर के हैं. वॉच दो सेशंस प्लीज एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू. इज इट क्लियर टू यू टीम? Yes, sir. सच में हैवी नहीं करूंगा आगे आपका. मुझे पता है कि इसमें हमने एच फैमिली वर्क किया है, ठीक है, क्योंकि कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है आज का. सो आपको ये प्रैक्टिस करनी है इस वीडियो के साथ. करोगे टीम? टेल मी. Yes, sir. हाँ जी सर. सेशन चाहिए सबको रिकॉर्डिंग पे ये वाला? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर बहुत हेल्प होता है रिकॉर्डिंग्स के साथ. Okay, so I will share the recording, Taran and all of you, Amarjit, Daksh, Meher ji, Sandeep ji, Masir Mittal, I will share the recording, right? Watch those sessions, pen down the entire, जैसे आज आपने मुझे भेजा ना, very good. ऐसे ही मुझे भेजो टीम. तरन आपने भेजा, very good. मेहर आपने भेजा, that's very good. Clear? अमरजीत आपने भेजा, शायद दूसरे फोन पे भेजा आपने, कुछ भेजा आज कंटेंट आपने लिख के? नहीं सर, मैंने आपको जस्ट फोन करके क्वेरीज पूछी. Okay, all right, no problem. So watch those sessions, pen down entire content. Now I'm going to share 5 videos. सारी ग्रामर की वीडियोस हैं, सारे आप ही के सेशंस हैं, उनको देखो. इट विल हेल्प यू. से क्लैरिटी एंड टुमारो आई विल कम बैक विद द न्यू वर्ब्स. और कल आपको सेशन बहुत हल्का फील होगा क्योंकि हम ऑलरेडी यही चीज. इज इट क्लियर टू योर टीम? तो मुझे ग्रामर में आपको बहुत लाइट फील करवाना है एंड गोइंग फॉरवर्ड इट विल बी. डोंट यू थिंक सो टीम? टेल मी. Yes, sir. Yes, sir. Hello. All right. So we'll meet you tomorrow same time. By the time, good night. Take care. Bye. Okay, team. Thank you, sir.